हरे कृष्णा। Yes, please. Every human being has this defense mechanism, which one feels is very essential for one's survival. ठीक है ना? जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक व्यक्ति था. There was a person, let's say a young adult. I wouldn't say any gender. And आज के जमाने का था, तो अपने डॉग को वॉक पर लेकर जा रहा था. So I had a pet dog, taking the pet dog out on a walk. So another person meets him on the walk and says, "What are you doing walking with the donkey?" गधे के साथ क्या कर रहे हो आप चलते हुए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये गधा नहीं, कुत्ता है. तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे नहीं, कुत्ते से बात कर रहा हूँ. तो ये जो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, जो बहुत आवश्यक होता है, कि जिसे लगता है कि बहुत आवश्यक है सरवाइव करने के लिए. Many times it is a kind of an imagination of the mind. And the reason behind that is because we feel कि people should acknowledge and accept our successes in life. जो कुछ हमने यश प्राप्त किया है ना इस संसार में, तो we feel कि it should be accepted and it should be appreciated by people around us. उसमें कोई गलती नहीं है. लेकिन when it becomes unhealthy, मतलब जहां पर वो हेल्पफुल नहीं होता, तो उसको ईगो बोलते हैं. तो जो आपका क्वेश्चन है ना, उसको कि कभी कभी कहा जाता है, बड़े जो हैं, हमसे उम्र में जो बड़े होते हैं, वो हमसे कहते हैं कि आप अभी छोटे हो, आपको बात समझ में नहीं आएगी, आप कर नहीं पाओगे. So we have to hear it with our ears. अपने कानों से हमें सुनना है उसे. लेकिन we also have to rationalize it with our intelligence. कि where is this coming from? अगर वो अपॉर्चुनिटी हम ले लेते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर एनालाइज कर लें हम कि where is it coming from? Why is such a statement being made? Or once having analyzed it, if we can analyze it as a young person, अगर उसको analyze कर लें और ऐसा लगे कि उसमें कुछ benefit है, if it is helpful, then we can take that to heart. कि अगर किसी ने कुछ कहा है कि अभी आप छोटे हो, नहीं समझ में आएगा, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, मतलब इट मीन्स कि आगे शायद
देख नहीं पा रहे हैं हम, ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो मे बी इट इज बेनिफिशियल। एक वो हो सकता है। तो अगर थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले लें, या थोड़ा सा हम रिएक्टिव होने के पहले थोड़ा सा मेडिटेटिव हो जाए, थोड़ा सा एनालिसिस कर लें उसका, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे अंडरस्टैंड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहली बात ईगो की बात आती है। दूसरी बात होती है, should we give ourselves some time to analyze another's perspective? और अगर ऐसा लगता है कि हमारी पर्सपेक्टिव जो है सामने वाले जो है उन तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए उनका रिस्पांस कहीं वो उनके ईगो पर तो बात नहीं आ गई, या इज इट पॉसिबल कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवर पर्सपेक्टिव, जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि आप नहीं समझ, यू नो समटाइम्स एल्डर्स डोंट रियलाइज दैट वी आल्सो आर केपेबल। तो कैपेबिलिटी की बात इज बेसिकली अबाउट पर्सपेक्टिव, है ना। एक बड़ा चमत्कारी योगी एक गांव में आता है और बोलता है, मैंने 25 साल हिमालय में तपस्या की और मेरी तपस्या से मुझे सिद्धि मिली है कि मैं पानी पर चल सकता हूँ। तो गांव वाले बड़े इम्प्रेस्ड हो गए। तो गांव वालों ने कहा कि ठीक है, कल आप बताइए, हम सब आएंगे देखने के लिए चमत्कार। तो दूसरे दिन उसने चमत्कार दिखाई, वो नदी पर सबको ले आया और फ्रॉम वन एंड ऑफ द रिवर टू द अदर एंड फ्रॉम वन बैंक टू द अदर बैंक क्रॉस ओवर कर गया, नदी पार कर गया पैदल चलकर। कैन यू इमेजिन? दिस इज एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी, आई एम जोकिंग। लेकिन उसने ऐसा किया। तो देयर वाज अ बोटमैन एंड द बोटमैन सेड, अच्छा 25 साल की तपस्या इज वर्थ 10 रुपीज। तो उसने कहा 10 रुपीज वर्थ 10 रुपीज, व्हाट डू यू मीन? मतलब 10 रुपए में मैं भी लोगों को नदी से पार करवा देता हूँ, 10 रुपए में उनको अपने नाव में बिठा कर, है ना। सो आवर कैपेबिलिटीज, we must understand that जब हम लोग कहते हैं कि we are capable enough, that is a perspective, and that perspective is valid and valued. But it is but, and the word is but, generally politically correct होने के लिए however word use करते हैं, लेकिन but it is a perspective, but it does not stop us from proving ourselves right. अगर हमको लगता है कि हम जो हैं उस चीज को सिद्ध कर सकते हैं, उस गोल को अचीव कर सकते हैं, तो the doors to success cannot be shut down by another person even if they are an elder. ठीक है ना। तो करेज लूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने कह दिया, अरे बात तो कह दी ना किसी ने, तो ईगो पर बात नहीं ले लेनी चाहिए। मौके पर, जैसे कहते हैं उर्दू में, मौका है वारदात, टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, उस समय, एंड मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल। सो तो एक ब्रीफ में हमने प्रिंसिपल समझाया। ऑब्वियसली देयर आर मेनी मोर आई गेस डिटेल्स। तो डिटेल्स के अनुसार अलग अलग और भी वेज ऑफ फंक्शनिंग हो सकते हैं कि कैसे हम वहां पर कार्य करें उस परिस्थिति में। होपफुली एज अ यंग adult or as a young person, hopefully we understand the difference between being egoistic, which is unhealthy, and being able to take feedback. Even if that feedback is unnecessary, being able to take it. क्योंकि है ना, 10 लोग तो 10 राहें होती हैं, और elders जो हैं, hopefully the elders around us are people who are concerned about our well-being. So we should we can be grateful that they are our well-wishers. At the same time, we should not
let we should make it our strength, not let that be a source of our not trying, not being able to go ahead. ठीक है? Extinguish our ego. Ego is a part of our existence. अगर मुझे बड़ा ही charismatic अभी होना, मतलब popular होना है, तो I should give quotes like ego before I go or something like that. E before I. ऐसे कुछ तो, लेकिन no, let's not do that. Ego, as I said, is also a defense mechanism. It is necessary to have an identity. ये दोनों एक, this is a statement and this is also a praman. This is also this statement that I use can also be used as supporting evidence. तो एक statement अपने आप में ही कि ego is a necessary defense mechanism because it gives us a sense of identity. So इसको आप yeah, so this is a statement in itself that it gives you a sense of identity, or you could use it as a supporting statement to be the person you are. Okay, ego helps you to be who you are. So rather than say extinguish ego, since it is a part of a personality, it is who we are basically. You know? So from where I come from, the yoga tradition, the yogic tradition, because I've been practicing that for many years, especially bhakti yoga. Ego is a part of your subtle existence. Man, buddhi, ahankar कहते हैं उसे, subtle existence. So one has to be able to realize that one can live in the real world or one can live in the imaginary world. Living is a state of mind basically, है ना? तो अगर जैसे कि एक बहुत बड़ा एम्परर था, उसको लगा कि let me take some advice from a learned person, so he visited a saint. तो the saint, it appeared कि saint ने उसको acknowledge नहीं किया था उसके presence को, तो emperor के लिए बड़ा hurting हो गया था ना, the emperor felt hurt. तो emperor ने उस saint से कहा कि I have come here in a humble state of mind, but you are not even acknowledging me, so this is hurting me, so I can actually punish you for this. तो उस साधु ने ना looked up quizzically कि भाई मतलब आप कहना क्या चाहते हो ऐसे, with a question mark on the face. So to prove his point, the emperor picked up a sword. जो उसका sword था ना, तो emperor ने तलवार निकाली और कहा कि अभी मैं आपको मृत्युदंड दे सकता हूँ, I am the emperor of the world and I can do that. Emperors have a belief like that, they can do that. So the sadhu said, the reason I'm not directly communicating with you is because you are the servant of my servant. आप मेरे नौकर के नौकर हो. This was so drastic. It was so abrupt that the emperor was speechless. So the emperor asked, can you explain this, elaborate on this? So sadhu ने कहा, देखो, I have conquered anger and you are a servant of anger. है ना? So you become the servant of my servant. तो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपका मालिक है ना और जो मेरा सर्वेंट है,
पहले आप उसके साथ डील करो, फिर मेरे पास आ जाना डील करने के लिए. Then we'll have a talk directly. So living is actually a state of mind. Life is basically a state of mind right now. जिस perspective में हम रह रहे हैं, तो वो रियल हो सकता है या अनरियल हो सकता है. It can be reality or it can be imagination. तो क्योंकि ego is about existence, we should have our ego should be that which is real, not unreal. तो रियल ईगो क्या है? इन शॉर्ट, रियल ईगो ये है कि आई एम एज अ पर्सन, एवरी सिंगल पर्सन इज मोर इक्विप्ड टू सर्व देन टू गिव ऑर्डर्स, मोर इक्विप्ड टू डू दैट. है ना? अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे पानी ला कर दो, तो वो ऑर्डर पास कर, लेकिन उस पानी का करेगा क्या? या तो पिएगा या तो स्नान करेगा. सो आई गिव एन ऑर्डर टू समवन, बट अल्टीमेटली I serve the purpose of water. Water either cleans me or water either quenches my thirst. So then I have to become submissive to water. The perspective है कि we are more equipped to serve. So we have to mold our ego in such a way that we learn how to do good service, even if we are in a position of giving orders. ठीक है ना? तो एक्सटिंग्विश करने की जरूरत नहीं है, उसको अच्छे से स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है या डवटेल करने की जरूरत है. अरे ये तो बहुत बड़ा पैंडोरास बॉक्स खुल जाएगा अब तो. चाइल्डहुड इज सपोज टू बी शेल्टर्ड बिकॉज उस समय हर चीज जो बहुत ही पोटेंशियल होती है ना, एनीथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल डायमंड्स, यू नो, वी नो हाउ डायमंड्स आर फॉर्म्ड बाय प्रेशर ऑफ अर्थ. ना चारकोल के ऊपर बहुत प्रेशर होता है ओवर सो मेनी इयर्स ऑफ टाइम. डायमंड, गोल्ड, मिनरल्स. मिनरल्स आपको जो है वो सिक्योर मिलते हैं अंडर द अर्थ या अंडर द ओशन. वैसे ही आपको रत्न जो है, जूल्स मिलते हैं आइदर डीप इन द माउंटेन्स और डीप इन द ओशन. डायमंड आपको मिलेगा इन माइंस, है ना? जो चीज आपको बड़े आसानी से मिलती है, पानी जैसे मिलता है, वाटर. So water is available either in the form of clouds, so that is also hidden, it is protected. It is available in the form of ponds, so that is restricted area. In the form of rivers, again restricted area. तो जहां पर भी एक पोटेंशियल होता है, जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी कह लो आप, there is need that it is sheltered because it has potential in it. As soon as that converts into kinetic energy, क्रिया में जब वो converted हो जाती है ना, तो उसको sheltered रखकर फायदा नहीं है. डायमंड को आप खानों में से निकाल लें, you take it out from the mines and you keep it in your तिजोरी, तो फायदा क्या है? Either you use it in the industry as industrial diamonds, you know, you use it to cut glass and other things, or you use it to trade. You use it as currency basically. कि या तो अपने you can use it as jewels or ornaments, which actually what you're trying to do is sell off your persona. So you use it as a currency. आपकी personality को आप उभारना चाहते हो तो आप diamonds का use करते हो. So once it is changed into another form of energy, the potential energy is converted into something else. So now there has to be kriya. तो वहां पर you cannot keep it sheltered anymore. So childhood is a time where one has to be under pressure
so that हमारा जो hidden potential है as a diamond that can be revealed from our charcoal like existence right now, है ना? तो the question is किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने ध्यान रखना चाहिए, जो शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं या जो शेल्टर्ड है? तो जिन्होंने हमें हाँ, जो शेल्टर्ड रखा हुआ पेरेंट्स या एडल्ट्स, उन्हें किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए? तो वो आज शायद मे बी दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कि जो शेल्टर्ड है ना, जो कल के जो बच्चे हैं आज जो देश है या समाज के नागरिक बनने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जिसको कहते हैं, यू नो, कि आज वोट कर सकते हैं वो, और गवर्नमेंट जो है निर्माण कर सकते हैं इन अ डेमोक्रेसी. तो उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट दे हैव टू become wise as early as possible. Wisdom, जितने जल्दी हो सके उन्हें wisdom प्राप्त करना चाहिए. That is very important. So being wise helps you understand the difference between understands the importance of being caring, and it makes you understand the importance of being careful. It makes you understand the importance of, or it makes you understand the repercussions कि नुकसान क्या होता है of being careless. तो हर चीज का अपना एक जो है इम्पैक्ट होता है मेरे लाइफ में. Being caring, being careful, being careless. और कभी-कभी each one of this has an impact. Let's say you are too careful while attempting a new project. Too careful मतलब आप अपने sheltered situation में से बाहर निकलते ही नहीं हो, comfort zone में से बाहर निकलते ही नहीं हो. You do not take risks, because risks basically means monitored or well thought carelessness. That is called as a risk. है कि नहीं? अगर कोई खाई है और आप उसको you jump across that ditch, so should you call it carelessness or should you call it a well thought out step going forward? It depends क्या होता है, कैसे आपने सोचा उसके बारे में. तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि carelessness is to be given up. ऐसा नहीं कह सकते हैं कि you should be always very caring. ऐसा नहीं कह सकते कि you should always be very careful. Nonetheless, being careful and being caring has a deeper meaning, and being careless is something that we should avoid. As a generic principle, इसको avoid करना चाहिए. So try and be wise. ठीक है ना? Always be very, very open to suggestions. That is another part of wisdom. Always be very open to both success and failure in life. Be a seeker. Be somebody who can understand problems, who has the courage to face obstacles, and have the ability to find solutions or to find ways how you can get through those obstacles. तो जितने जल्दी आप wise हो जाओगे ना, उतना अच्छा. Wisdom is an essential, I would say, attribute, an ornament for transitioning from childhood to being a responsible adult. Is that helpful? अच्छा है, वो आपको ठीक लग रहा है? Career choices. How do you decide career choices? It is confusing because आपके पास आपको लगता है कि
आप बहुत चीज कर सकते हो या पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. As I said, life living is a state of mind. So it is always dynamic. It cannot be static. So the very idea of making career choices, what is it connected? Is it connected to, is it related to, how does it make sense basically uh, to you as a person? Is it about being uh, comfortable in life in terms of comfort, money? तो फिर ठीक है, तो उसके अनुसार फिर आपका करियर चॉइस ये होगा कि आपको क्या लगता है कहाँ पर आप सफिशिएंट अर्न कर पाओगे और आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे और उन रिसोर्सेज को अपने गंतव्य तक टू यूज दोस रिसोर्सेज टू अचीव योर रिजल्ट्स. व्हाट आर द स्किल सेट्स दैट यू नीड. तो आपके स्किल सेट्स, रिसोर्सेज के यूटिलिटी और व्हाट इज योर what do you want to achieve when you use those resources and when you apply those skill sets. So accordingly आप अपना career choice बना लीजिए. और जैसा हमने कहा कि life is a state of mind. So basically it means that your career choices can go on evolving. ठीक है ना. कोई बोलता है कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे देते कि कोई बोलता है कि हमें इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है कि हमें टीचर बनना है. बहुत अच्छी बात है. That can be a career choice. However, if you think that that is a static choice, then we are mistaken. कि हमने चूज कर लिया, उसके लिए हमने काम कर लिया, हमने सर्टिफिकेशन ले लिया, अब तो हो गया भाई, गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई, अब रिटायरमेंट तक सोचना नहीं है. तो बड़ा स्टैटिक हो जाता है ना. मतलब एनीथिंग दैट stays in the same position for a long time except gold, except noble metals that stays stationary for a long time are simply attracting unsolicited या unwarranted changes in their life. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना है आपके साथ अगर आप नोबल मेटल नहीं हो तो अगर आप उसको if you are not if you are not the person that is participating in the change in your life, then basically you simply become a recipient of whatever changes are brought in your life. And I think the mind is capable of doing much more, and therefore life is much more. So आपके career choices हमेशा evolve होंगे. It cannot be defined by just the idea that you're a teacher or you're an engineer or you're a doctor or you're a lawyer. क्योंकि उसके बाद if you're a lawyer, then आपका career graph कैसे होगा depends upon how you practice as a lawyer. If you're a teacher, वो graph depend करता है कि कैसे होगा आपका career graph, कैसे evolve होगा depends upon how you contribute as a teacher. तो वो this would be as तो पहले मैंने बता दिया कि it is always evolving. Enjoy the evolution. Prepare to take it. Enjoy the evolution. That is very important. Have fun. You know, sometimes as young adults, you know, from childhood to adulthood, थोड़ा सा ऐसा when we hear the word being responsible, तो ऐसा लगता है बहुत serious है, बहुत gravity, बहुत grave होना पड़ेगा. You know, have a long face and you know tie, suit पहन कर ऐसे एकदम typical responsible person की तरह. Have fun. है ना?
When you started crying, maybe your sister thought that you are going to miss her. उसका पर्सपेक्टिव ये होगा कि कोई नहीं बहना, आप जो है ना, डोंट मिस मी सो मच. आपको एक जोक सुना है इसके संदर्भ में, करियर चॉइसेस के बारे में? कॉमन जोक्स है ये, बहुत हम लोग प्रवचन देते रहते हैं ना, तो हम लोग ये जोक्स बोलते रहते हैं. एक बार एक सत्संग कार्यक्रम हो रहा था, जागरण. कभी कभी होता है ना, माता का जागरण होता है, बहुत फेमस है माता का जागरण. रात भर जो है बैठ के भजन करते हैं, या एकादशी व्रत करते हैं, रात भर भजन कीर्तन करते हैं, रात भर करते हैं. तो ऐसे सत्संग कार्यक्रम में एक प्रवक्ता आ गए थे. देयर वाज अ स्पीकर हु हैड कम, अ सेंटली पर्सन, एंड द पर्सन सैट ऑन द डायस. जो भी जगह दी गई थी ना, तो गांव में कैसे होता है कि देयर इज नो डायस, देयर इज जस्ट अ सीट, एक आसन होता है, तो आसन पे बैठकर प्रवचन करने लगे. रात भर उन्होंने प्रवचन किया. तो सवेरे सुबह होते होते ना, द क्राउड हैड काइंड ऑफ थिन्ड आउट. लोग धीरे धीरे उठकर चले जाने लगे घर पर जाकर, क्योंकि किसी को सोना है, कुछ करना है. एक ही आदमी बैठा रहा. So the speaker was very inspired that at least one person, is here with me. So he thanked the person ki, this was a male speaker. So he thanked the person ki, आपने रात भर हमारा साथ दिया, आप में कितना डेडिकेशन है, कमिटमेंट है. तो उन्होंने कहा, वो जी ये कमिटमेंट और डेडिकेशन, ये सारे शब्द तो समझ में नहीं आए, इसका अर्थ बताइए मत, मैं बहुत थक गया हूँ रात भर बैठकर. वो जो आसन आप बैठे थे ना, वो मेरी आसन है, वो घर वापस जब तक नहीं ले जाना है. तो ऐसा लगा कि इस आदमी ने अपना करियर सेट कर लिया, रात भर इस सत्संग में बैठ सकता है. लेकिन उसका मोटिवेशन कुछ और था. दैट इज जस्ट अ जोक, जोक्स अपार्ट. ठीक है. हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Okay, I think maybe this is better, and then I change it. हाँ, अच्छा क्वेश्चन है. एक
माता का भक्त था, ठीक है ना। देवी माँ, माता रानी को बहुत मानता था। तो माता रानी से जाकर बार बार ये कहता था, माता रानी मुझे थोड़ा सोना दिला दो, आप सोना चाहिए, आई जस्ट सम गोल्ड। तो ऑब्वियसली द पर्सन नीडेड सम, उस समय गोल्ड वाज अ करेंसी आई गेस, और नीडेड इट एज सम सोर्स ऑफ वेल्थ, जो भी हो। माता रानी कृपा कर दी, उसे गोल्ड दे दिया, चंक ऑफ गोल्ड मिल गया उसे कहीं से, चंक ऑफ गोल्ड। अब जब गोल्ड आ गया उस व्यक्ति के पास, तो उसके मन में फियर आ गया कि अरे ये कोई चोरी कर लेगा, किसी को पता चल गया, लूट लेगा। तो द पर्सन टुक दैट गोल्ड, chunk of gold, went into the forest and dug up the earth, थोड़ा सा एक होल कर कर वहां पर छिपा दिया उसने गोल्ड को। अनफॉर्चुनेटली दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय अनदर जेंटलमैन हु वाज हिडन। तो उस आदमी ने क्या किया, उसको चोरी कर लिया। तो इसको बड़ा दुख हुआ कि उसका सोना चोरी हो गया। तो रोने लगा, माता रानी के पास फिर गया, माता रानी वो सोना चोरी हो चुका है, तो अब मैं क्या करूं। तो माता रानी ने कहा ठीक है, आप जाकर ये एक साधु से मिलिए, उनको बताइए, वो आपकी मदद करेंगे। तो साधु से मिलने गए। साधु ने कहा कि कहां पर आपने छिपाया था अपने गोल्ड को, अपने सोने को। तो जाकर उन्होंने स्पॉट दिखाया। तो साधु ने एक पत्थर लिया, उसको गोल्डन कलर लगा दिया और उसको जमीन में रख दिया और कहा कि देखो ये आपका सोना है, खुश, अभी मतलब दुख मत करो। तो बोला कि साधु महाराज ये क्या कर रहे हैं, आप तो हमें जो है ऐसे धोखा दे रहे हैं, है ना, कल आपका हेडलाइंस में डाल देंगे, धोखा देने वाला साधु। तो साधु ने कहा कि नहीं, देखिए जब सोना आपको जमीन में गाड़ कर छिपा कर ही रखना है, तो क्या उससे फर्क पड़ता है कि वो सोना है कि सोने जैसे दिखने वाला कोई वस्तु है, देखकर ही खुश होना है ना। तो बात समझ में आ गई उसे कि एनी फॉर्म ऑफ करेंसी इज अ मीन्स टू सस्टेन योर लाइवलीहुड। अब आपका सस्टेनेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी। रामायण में कहानी आती है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है ना। तो भगवान रामचंद्र जो है भाई, आ, उन्होंने तो हम सबके लिए प्रूव कर दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, एकदम डटे रहे, ना भूतो ना भविष्यति। प्रभु रामचंद्र जी चले गए वनवास के लिए। सीता जी जो है, शी ऑल्सो काइंड ऑफ शोड व्हाट इट मीन्स टू बी टुगेदर इन थिक एंड थिन, तो वो भी चले गए उनके साथ, लक्ष्मण जी भी चले गए। भरत को जब पता चला कि ऐसा हुआ है, भरत ने कहा दिस इज नॉट दिस इज नॉट हैपनिंग। तो राजकुमार भरत ने क्या किया, पूरी एक सेना तैयार की और बड़े बड़े जितने भी जो एल्डर्स थे सोसाइटी के, मतलब पीपल हु कुड मेक एन इम्प्रेशन ऑन यू, उनको साथ ले लिया। And the citizens of Ayodhya also decided to go with him because the idea was we'll bring back Ram. So before they had to cross two rivers basically. एक तो उनको सरजू नदी, जिसको सरायू कहते हैं, बट टिपिकली सरजू कहा जाता है। तो सरायू नदी थी और दूसरी बड़ी नदी थी गंगा, to reach the place where Lord Ram was basically camping out, you know, मतलब एक कैंप आउट था भगवान राम का वहां पे, लंबा कैंप आउट कर लिया भगवान ने 14 साल का। और
When they reached the banks of the river Ganga, कि उसको क्रॉस करना है, गंगा मैया को क्रॉस करना है, तो एक ऋषि मुनि के आश्रम में, जिनका नाम था भरद्वाज मुनि, और उस रात को जब वो सारे नागरिक, ऑल द सिटीजन्स और सारी सेना रुकी थी, बाय हिज मिस्टिकल पावर्स, अब उसको मिस्टिकल पावर्स कहिए या आपको चाहिए तो कहिए कि उनके पास ह्यूज बैंक बैलेंस था, जो भी था भरद्वाज मुनि के पास, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयोजन किया। ही क्रिएटेड रिजॉर्ट्स, भागवत में ये, रामायण में ये डिस्क्रिप्शन आता है, लिविंग प्लेसेस उनके लिए क्रिएट किया ताकि वो आराम से सो सके रात में, उनके लिए फीस्ट जो है निर्माण किया, अच्छा भोजन निर्माण किया, मतलब इट वाज लाइक 15 कोर्स डिनर और समथिंग लाइक दैट, मतलब 7 स्टार फैसिलिटी दिया उनको सबको। तो अगर उनके पास इतनी फैसिलिटी थी तो फिर अपने आश्रम में वो एक रिजॉर्ट शुरू कर सकते थे ना, कि यहाँ पर आकर आप अपना मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हो, यहाँ पर यू कैन स्पेंड सम वीकेंड्स, ऐसे करके। तो भरद्वाज मुनि ने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट हैड द एबिलिटी टू डू इट, बिकॉज his livelihood, his idea of sustenance was that he could live simply, एक हट में रह सकते थे वो, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो उनके पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो दूसरे लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दिलवा सके। So when we speak of is money necessary, it depends upon what is your outlook in life, and hopefully your outlook in life is कि be content with what is needed and be eager to serve others magnanimously. अपने लिए जितना आवश्यक है उतने के लिए आप प्रयोजन कर लो, जो आपके लिए, I'm not saying you have to be frugal, I'm saying what is needed for you to feel comfortable. And having a very good, a healthy, rather than good, I would say, having a healthy idea of what is a good lifestyle is important. Taki, one does not overindulge. So, what is needed for a sustenance and what would be helpful to serve others whenever the opportunity comes up. That is how one should use dhan. That is how one should use currency. So, uske hisab se one can try and deal with how much money, if at all money, is needed in one's life. But definitely, it is a form of it helps you trade. It helps you deal in this world. ये सुना है कि money can't buy you happiness? ये सुना है? How much do you subscribe to it? I don't expect you to give an answer, but I will एक मैं दूसरा statement देता हूँ, उसके बाद आप अपना बताना कि which statement you would like to subscribe to. So money can't buy you happiness. There is a statement like that, isn't it? And the second statement is money definitely can't buy you happiness, but it sure goes a long way in reducing your misery. You want to subscribe to the second one? ठीक है. All right. ठीक है. Yeah, money is something that you should be, it is something that has a utility purpose. It should not become your definition, the definition of who you are. Relationships are more important. तो आपका अपने साथ क्या relationship है? Invest in that. आपका दूसरों के साथ क्या relationship है? Spend enough energy in investing in that. और उसके लिए कितना money की आवश्यकता है, उसके हिसाब से आप money जो है इकट्ठा कीजिए. अच्छा. See, the one thing about dreams is that dreams never have an expiry date. You can always go on dreaming.
तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना. रियल एंड अनरियल कैन बी, इट इज वेरी वेरी कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन what resources you have. It depends on what are your skill sets. अभी ऐसा कहा जाता है कि running the mile under 4 minutes was at one point of time impossible. Then one person did it, ran the mile under 4 minutes. Within a year, 4 to 5 other persons also did that. है ना? 1960s में पहली बार Mount Everest was successfully climbed. Today we have thousands of people making that endeavor. So real and unreal is very very contextual. It is very relative. आज के लिए आपने उन चीजों पे काम करना है. I'm thinking that this is about, as a young adult, what are the things you should pursue? You should be able to have a priority list in your life. Priorities क्या है? वो आपको पता है, you have heard about how to manage your rocks and pebbles and sand in your life in terms of time management या space management. नहीं समझा? अच्छा ये okay, सुना होगा, but when I give you this example तो फिर समझ में आएगी. ये बड़े बड़े लोग जो है ना, ये एग्जाम्पल देकर बहुत पैसा कमाते हैं, and it's good कि पैसा कमाते हैं through their seminars and webinars and whatever. I'm not sorry, इतना भी sarcastic नहीं होना चाहिए ना. So I'm really sorry for that. Take a beaker. उसके अंदर सबसे पहले आपके लाइफ के बड़े बड़े रॉक्स आप डालो, बड़े बड़े पत्थर डालो. वो डालने के बाद once you have that and there is space in that beaker, in that glass container, you have on that container, then you put in smaller stones. They will occupy some space. उसके बाद आप sand डालो उसमें. The sand will go into the little crevices that is remaining, the little spaces that is remaining. उसके बाद उसमें आप पानी डालो. Water still find space within it, है ना? तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए द बिगर रॉक्स, क्योंकि अगर आप पहले पानी डाल दोगे ना तो रॉक्स के लिए जगह नहीं रहता है, unless until it replaces some of the water. So it's another skill, I guess, or slowly life teaches you of what are priorities. So typically in any motivational seminar, you'll hear ki give priority to relationship, give priority to your spiritual upliftment, give priority to your health, and then work. ऐसा बताएंगे वो, generally typically ऐसा कहेंगे वो priority के बारे में. So that is up to you. This is not I'm not going to give you seminars on that. कभी अगर चाहें तो we can talk about that too. The pyramid structure जिसको बोलते हैं ना, the pyramid of life. बेस पर जो सबसे बड़ा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? What is that biggest priority? Should it be your spiritual existence? Generally उसको वहां पर डाला जाता है, spiritual existence. और जो tip of the iceberg होता है वो होता है your work, your career, or your comforts that you're looking for. That is the tip of that. The base is bigger. तो अपने लाइफ में आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपके क्या क्या नेसेसिटीज हैं, और अगर अभी आवश्यक है आपकी नेसेसिटी ये है कि यू टेक केयर ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स रादर देन योर इंटरनल थिंग्स, तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट टू टेक केयर ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स. एक ना मेडिटेशन कैंप में नया रिक्रूट आया था, तो वहां पर ये जैसे zen बुद्धिज्म में कभी कभी there's this understanding that they can fly in air or something like that. या कभी कभी जो mystical monks होते हैं in Indian tradition, ऐसा लगता है कि
They can do things with fire and water and air. So in this meditation camp, a person had joined the camp for the first time. तो दो सीनियर्स के साथ मेडिटेशन के लिए बैठ गया वो. मेडिटेशन के लिए जब बैठ गया, so they were meditating beside the small pond. और they meditated for a couple of days. The meditation process was कि एक दिन या दो दिन तक deep meditation में रहना है, and then after that they had programmed themselves to come out of that meditation और बाकी काम करेंगे, खाना खाएंगे basically. So on the third day, when they had to go to the restaurant या the prasadam hall, जो eatery है वहां पर जब जाना था, so the first monk got up and walked across the pond on the water. Water पर चलकर चला गया वो. तो जो सेकंड मंक था वो भी उसके पीछे पीछे वाटर पर चलकर went across. जो ये तीसरा मंक था जो 2 दिन का मेडिटेशन कर चुका था, उसने सोचा कि ये मेरे साथ बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, and they are they are going across this pond by walking on the water. So हम भी वही करते हैं. So the person tries to do that and sinks in the water. Doesn't drown basically, but just sinks. तो पहला मंक दूसरे मंक को बोलता है कि maybe we should have told him where the rocks are to step on. You understand? So the idea कि do we need rocks to step on, मतलब external चीज पर ध्यान देना है या internal पर ध्यान देना है, it all depends on the situation. So one should be very malleable in one sense also. Flexibility होनी चाहिए थोड़े life में ताकि आपके priorities को आप rearrange कर लो. But in a generic way, we can decide as to what are the priorities in life. And once we have decided that, थोड़ा decision making आसान हो जाता है. आप जो choices ठीक से ले पाते हो. ठीक है? Yeah. हाँ. Very nice. You know, success and failure have been looked at as very overwhelming experiences, जबकि लाइफ में ऐसा typically होता नहीं है. Typically लाइफ में क्या होता है कि you are faced by situations which can appear to be success or failures. वो broken pot का example पता है? Broken pot. Okay, so there is a lady who would every day take 2 pots to the river, fill it with water and bring it back. One pot was completely healthy, the other pot had a crack in it. So by the time she would come back from the river, the pot with the crack in it was partly empty. So the broken pot was heartbroken. मतलब उसे बहुत बुरा लगा कि I'm not fulfilling my purpose. तो उसने लेडी से कहा कि please forgive me, you have so much faith in me. However, I'm not fulfilling my purpose of holding water. I'm not fulfilling that purpose. तो ये लेकर आती थी पानी और then immediately she would use it for her work. So ऐसा नहीं था कि she would store that water. ठीक है ना? तो इतना भी उसके लिए crisis नहीं था water pot के लिए, but the water pot felt bad कि on the way itself it could not hold water. तो लेडी ने दूसरे दिन कहा कि एक काम करो, कल जब हम आएंगे ना वापस, आते समय when you are full, please look at your external things, look around and see what and let me know what you see. तो दूसरे दिन पॉट को ने वो नोटिस किया. तो उसने कहा कि what I noticed is कि on the way back
she would carry the pots in her hands. तो right hand में जो है healthy pot होता था, left hand में cracked pot होता था. So he said, the cracked pot said that on the left side, I noticed that there were many flowers growing. But on the right side of the road, I did not notice any of that. तो उस lady ने कहा कि हाँ. So the lady said, I already knew that you have a crack. Yes. So I planted seeds on the left side of the path. And on my way back, through that crack, water would sprinkle onto that earth and the seeds would be watered. And today, there are flowers that I can use. तो ये कहानी इसलिए बताई जाती है कि success or failure is a perspective. And if we become, if we this is also, there's also a spiritual lesson in this. If we trust in the maker, if we trust that God has some sensibility, मतलब कुछ है उस आदमी के पास या बंदे के पास, some sense of meaning है, अगर इतना मान लेते हैं, rather than go overdo about how God is all powerful and God can never be wrong, और ये सारी चीजें, I mean, all right, जब आप 50 साल के हो जाओगे तो then that is how we can interact with you like that. But when you're 15 to 25, let us think that God is a very fun-loving person and has a good sense of humor and also a sense of purpose in life. Let us just accept that. That is our maker. So whether it is success or failure, typically failures के बारे में, if we feel that we are a crackpot, there is still a way to find some meaning to life. We just have to look into it. Okay? So whether it is success or failure, both of them are failures if we stop trying. And whether it is success or failure doesn't matter because we get another opportunity to try again. Today's success does not stay tomorrow. So you have to try again tomorrow. And today's failure does not mean the end of life. Therefore, we have to again try tomorrow. So we can learn from both. If we stop learning, if we stop trying, then actually we will be called as failures because we have stopped trying. As long as we try, then we can never be losers. We are always winners. So a quote hai, maybe you like it. Losers quit when they fail, and typically losers quit when they succeed also. That is what losers are. But winners fail until they succeed. Does that make sense? So one should not give up trying. Success is not final and failure is not fatal. All right? One should always find the courage to go on in life, whether it is success or failure.
Thank you for asking the question. So this question is being asked as a parent or as a teenager. So the question should be, what are the skill sets needed as a parent of a teenager, right? Uh, once, okay, let me tell you the story, and hopefully that should serve as the moral of the story should be the guiding principle. There was a community of let's say very devout people, मतलब बहुत ही धार्मिक लोग थे और भगवान में श्रद्धा रखते थे. However, that community was facing drought for 3 or 4 years now. तो हताश हो गए थे. They had all become very disheartened. They had a priest. उनका एक local पंडित था जो they would who would always keep them inspired through prayers and through giving them motivation. So after 3 or 4 years of 4 years of drought, somehow they had used up a lot of their resources. They had used up all of their um, stored grains and resources over these years, and बहुत challenging था the 5th year. So they asked the पंडित की कुछ कर सकते हैं क्या? They asked this saintly person that could you please help us? So the saintly person said that tomorrow we are going to do this very interesting sacrifice, a yagya or some activity, and pray sincerely to God to send us rains. And for this, all of us have to come to this meeting place, the temple or this temple grounds, jo bhi hoga. To this meeting place, we have to come there and we have to do the sacrifice. So everyone came to that meeting place. The whole village came there. The whole community came there. Hundreds of people, and they did the sacrifice. And many of them then they asked the saint that since the sacrifice was done, uh, rains will the rains come? The saint was very quiet. The saint said that the sacrifices would be successful if you have faith. अगर आप में श्रद्धा है तब that is an important ingredient for the sacrifice to be successful. They said we are all faithful. हम सब तो आए ना sacrifice के लिए. तो उन्होंने कहा कि हाँ आप सब sacrifice के लिए आए, लेकिन आप में से किसी ने भी छतरी नहीं लाई. None of you brought umbrellas with you. Not a single person had come with an umbrella, which means they did not anticipate कि rains आएंगे. हालांकि sacrifice कर रहे थे कि rains आएंगे. So the moral of the story as a parent is, unless and until we have faith ourselves in the guidelines that we have provided to our children who are turning to teenagers, sacrifice से बारिश आएगी कि नहीं आएगी वो आप ही निर्णय लगा लीजिए. Is that all right? Would that be helpful? That story with that moral? Yeah. You're welcome. Thank you so very much.
Um, I'm indebted to the great teachings that I've received from our previous generations. भारत में एक खजाना है और हम सब ये जानते हैं, इतना हमारी पुरानी संस्कृति है. And only when I started understanding this culture that is called as India या भारत कहो उसे, it's not just a country, it's a complete culture which helps you evolve into a very successful human being or a very complete human being. That made me feel so indebted to be able to access ये सारा जो wisdom है ना इंडिया में. Or the wisdom of India is never narrow-minded. It is so broad-minded. This wisdom, इतना खुला हुआ है. इस wisdom में you can be whoever you want to be. यहाँ पर निराकारवाद से लेकर निरीश्वरवाद से लेकर ईश्वरवाद तक the whole panoramic view is there in this wisdom, ancient wisdom or wisdom from ancient times, we can say. So I feel that gratitude, and what I would also want to share and maybe pass on to the upcoming generations is कि let us develop a very good narrative of this ancient wisdom. Let us package it nicely, let us market it nicely, let us present it nicely. ये सब terminologies आज के दुनिया के हैं. So that it seems very relevant, it seems very practical, it seems very usable. कोने कोने में आपको ना हर जगह पर इतने सारे अनुभव है. I have spent a life of traveling to many places and still I feel that I have taken only baby steps because there's so much available. इतना है. That doesn't make me feel sad. What it makes me feel is so grateful कि my life actually is like an ocean filled in a drop. I no longer feel like I'm a drop in the ocean, but it is like a complete ocean filled in a drop, knowing very well that I'm still a drop and there is the ocean. So for that, I feel very grateful कि ये संस्कृति हमें मिली हुई है, जिसको हम भारतीयता कहें, जिसको हम इंडियननेस कहें, जिसको हम सनातन धर्म कहें. So let us all go into that and take up whatever is needed. And another thing that what you said, Shrikant, uh, on which I would also want to share my perspective is कि being open. You said something about being open, that थोपा नहीं गया कि हमने थोपा नहीं दूसरों पर कि this is the way. I kind of said कि this is the knowledge or this is a perspective and now it is up to you. A little tweak in that statement is कि when I say it is up to you doesn't mean that I don't take responsibility. So आसमान में कितना आपने कूदना है, how high you want to jump in the air, that is up to you. However, okay.
Should we wait for people to come in? Because एक वो final statement complete कर दो. I was not aware that we are again, going beyond the time constraint. Okay, so sure. So how high you want to jump in the air? Definitely, that is what we would love to see. Since it is since I am being put here as a person who's given perspective for other people to analyze, तो उसको specific रखते हैं. How high you jump in the air is up to you. Takeoff and landing, for that, the support of the earth is always there. The earth never gives up its responsibility. The ground never gives up that responsibility. आपने टेक ऑफ जब करना है जंप करते हुए, तो टेक ऑफ के लिए जो भी ग्राउंड सपोर्ट आपको लगेगा वो अवेलेबल है, और जब आप लैंडिंग करोगे वापस जंप करने के बाद, तो आपको फर्म ग्राउंड मिलेगा जहां पर आप लैंड कर सकते हो. So that is the perspective that I would like to offer, that as a service, as a dharma, that is the dharma that I have accepted, and most of us who call ourselves as Sanatanis, followers of Sanatan Dharma, we know that we want to serve. So we will always be there whenever needed to offer service, and you can take off on your own ways to achieve the goals that you have in mind. So that is it. Thank you very much. Hare Krishna. So for our viewers on YouTube and Facebook, that brings us to an end of this session with Arjuna Foundation, which was on Zoom. I'll try to find out if I can post the link to this Zoom session. And if I'm able to do that, then I'll post it on Facebook. Thank you very much. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai.